Okay, good morning, everyone. Whoever is here. So we still have few people, about 10 people who are attending the meeting. Um, so we'll continue from the last time. We started off with the discussion of, or finished off with the discussion on circuit switching versus packet switching. So I'm going to share my slides, and you can perhaps tell me if you are able to see the slides. Yes or no? Yes or no? Yes. Okay, so everyone can see the slides. So what I'm going to do is that very quick revision of circuit switching versus packet switching before we try to explain few more concepts in the networking systems, very basic concepts in the networking systems. Just a recap of what we did last time. Circuit switching, we said that is the kind of switching which is used for, big example of that is our plain old telephone network, the landline telephone lines which come to your house. They generally work on the circuit switched paradigm. So there is a piece of wire which goes from your home to local office. It gets multiplexed, not statistically multiplexed. Statistical multiplexing is not for circuit switching, it is for packet switching. But in circuit switching, you can have the entire piece of wire dedicated to you, or it can also be multiplexed, but it cannot be on demand. Even if it is multiplexed, the time slot or the frequency band which is allocated to you remains allocated to you for the entire duration of the connection. Okay. So, so we said that in the landline telephone system, circuit switched is used, and one of the things which is characteristic of the circuit switched network is that you first have to establish a connection. You don't know how to reach the destination. So this guy on the left, the computer on the left, wants to talk to this computer on the right, and there are switches and links in between, and it will have to first establish a circuit. So there is some time spent in establishing this circuit. Yeah. So time spent in establishing this circuit, which is the circuit establishment time. Okay. Once again, just as a reminder, we have vertical axis for time. So there is some time spent for establishing this circuit. Once the circuit is established, you can send data. And this time here on the left, is the time to inject so many bits into the link. How fast can you inject the bits into the link depends upon what speed the link is operating on, or what bandwidth the link is operating on. If it is 10 megabit per second, it will take you certain time. If it is 1 megabit per second, it will take you 10 times longer to inject that many bits into the pipe. Now, it does not depend upon how far that link is or how far the destination is. It only depends upon your local link that you are connected to, what speed that link is operating on, irrespective of the length of that link. So this on the left, what I have shown here is the amount of time that it will take you to inject the data, and this is called the transmission time or transmission delay. Now, each bit that you inject as a electrical signal or optical signal onto the link, each bit that you inject will travel all the way from left to right, and it will take certain amount of time. And this time here, now if I can draw this time, let me try to do that. So this is a horizontal line that I'm drawing. And this amount of time on the right that I'm showing here is the time that it took for the first bit
to propagate from the left to the right, from the source to the destination. पहली bit को इतना time लग गया. Okay. And this time is dependent upon the length of the link. Convince yourself that this time is dependent upon the length of the link. It is also dependent upon the speed at which the signal propagates. Generally, it is a large fraction of the speed of light, but it will take certain amount of time for this signal to propagate from left all the way to the right. And this time here is called propagation delay. It's called propagation delay. Propagation delay. So I'm not going to write propagation delay, but I will just write propagation delay. So this is propagation delay. Now, this is the delay, or this is the amount of time that it will take any signal. Every single bit will suffer this amount of time. That doesn't mean that if you want to send a large number of bits from left to right, you have to add the propagation delay for all the bits. It's not true. Why? Because once you send the first bit, you don't wait for it to be received at the other end. You just send the second bit right after that, and the third bit right after that. You know, the first bit will reach the destination after a very long time. Imagine you are sending something to Mars. Once you send the first bit, you don't wait for the first bit to reach Mars. Okay, you will send the second bit right away, third bit right away, fourth bit right after that, right after that, right after that. So all the bits that you are sending from your end, you are injecting from your end, they will take some time, but that time is dependent upon the speed of the link. That time is dependent upon at what speed the link is operating. 1 megabit per second, 10 megabit per second, 1 gigabit per second. Okay, so you send these bits one after the other. Now the first bit might take a very long time to reach Mars. The second bit will reach right after that. Third will right after that. But see that these bits are propagating in a pipelined fashion. You will have many of these bits in flight. Many of these bits will be in flight. Okay. So these bits will be going from the source to the destination in flight manner. So we'll talk more about that when we'll talk about delays. So coming back to the circuit switching, you have to first establish the circuit, send the data, and then close the circuit, tear down the circuit. So this is the characteristic of any circuit switched network. Now, there are two issues that circuit switched networks face. And first issue is that if you have lots and lots of data to send, you will never, once you establish the circuit, you will never be idle. But it is possible that your application is generating data at a small rate. If your application is generating data at a small rate, then you will only be sending data whenever it is available. And when the data is available, you will send it. When it is not available, you will not send it. So that means you will run into what we call wasted utilization. Okay. So wasted utilization. So this is also a characteristic of the circuit switched network, that you have wasted utilization. Another thing that might happen in a circuit switched network could be if you have very small amount of data to send, then you will spend a lot of time to establish the circuit, then quickly you will send that small amount of data, and then a large amount of time to de-establish or tear down the circuit, which means that there is a lot of time establishing, de-establishing the circuit, and very small amount of time consumed in sending the useful data. तो useful data भेजने के लिए बहुत time थोड़ा सा होगा, बाकी इतना सारा time हमें ज़ाया करना पड़ जाएगा, ठीक है? So if you have this large amount of data, you will send it. But if you have very small amount of data, then this small amount of data is very low utilization. So we have excessive overhead, lots of time to establish the circuit, lots of time to de-establish or disconnect or tear down the circuit, and only very small amount of time when you are sending useful data. This is also a characteristic of the circuit switch network. So also another thing in circuit switch network is that you have to establish the circuit all the way from source to the destination, source A to destination B. And this green line is showing that if something fails on the way, there is no recourse. There is no recourse other than re-establishing the circuit.
So you can re-establish the circuit such as this blue line here, which is shown, but you will have to spend that circuit establishment time one more time. वो दोबारा से करना पड़ेगा. Okay. So circuit switching does not route around the trouble. If there is a trouble, you have to re-establish the circuit. And this is very different from the packet switch network, in which each packet is admitted to the network independently. So किसी पैकेट को जो है ये खराब मिलेगा, यहाँ पे एक राउटर या स्विच जो है ये फेल्ड मिलेगा, वो अपना रास्ता ही तब्दील कर देगा. ठीक है. So maybe few packets will get dropped जिनको नहीं पहले पता होगा, लेकिन after that the packets they will route themselves around the trouble. Okay. How that will happen? That will happen by using some of the tables in these switches, and we'll talk about that in a lot more detail in later chapters as we progress. Okay. So some of the benefits of the circuit switch network, since you have a circuit established all the way from source to end, you exactly know that the resources are reserved for you from left to right. So here you have a question. Just hang on a second and let me finish my thought. So the benefit is that since you have a circuit established all the way from left to right, all the way from source to destination, all the resources are reserved for you. Nobody else can use those. So you have a predictability. You know exactly how long is the path. You know exactly the data that you are sending, the information that you are sending over the connection, how it will go from the source to the destination, what path it will take. So you have a predictable performance. Not just you have a predictable performance, you also have very fast switching. You don't have to open the packets and look at the destination like you do in the case of packet switch network. In the case of circuit switch, the path is established for you. You will just take that path and boom. The disadvantage of circuit switching is that what we have just explained. One is complexity of setting up the circuit and tear down. It's additional overhead, additional time spent karna pada. It's also inefficient when traffic is bursty. Bursty means you send some data and then you are idle for a long time. This is how the internet traffic is. That you send some data, bring the page on your browser, and then you start reading the page and you are not using the network anymore. So traffic is bursty in the case of internet, and circuit switch is very inefficient. Why? Because the resources are reserved for you. You are paying for the entire duration of time. It's very inefficient to use the network for a small durations of time and sit idle for a long time. So if you have bursty traffic, you wouldn't want to use circuit switched network. Also, the circuit setup adds the delay. Circuit setup will add the delay. Also, if the switch will fail, then there will be a problem because the circuit is gone. You have to re-establish the circuit. Now let's come back to the question. So here you had the question first. Please go ahead and ask it. Yes, sir. So when we are setting up the circuit, the packet goes from one computer to the switch, then it takes time, and then it takes time to the next switch. So line may break stay. But when it was coming back to line बिल्कुल like straight थी. So does the packet does not need to be checked कि कहाँ जाना है उसने, या उसको पहले से पता चल जाता है switch को कि इससे कहाँ जाना है, या it was just. वो breaks जो थे वो इसलिए दिखाए गए थे. Oh, let me just go back to that. वो ब्रेक्स इसलिए दिखाए गए थे, ये ब्रेक्स इसलिए दिखाए गए थे. यहाँ इस ब्रेक की बात कर रहे हैं आप, राइट? यस सर. सो ये ब्रेक की बात कर रहे हैं. ये ब्रेक्स जो हैं ये इसलिए हैं कि एक स्विच पे पहुंचा, अभी तो सर्किट एस्टेब्लिश नहीं हुआ हुआ, स्विच को अब आगे से पता करना है कि भाई रास्ता अवेलेबल भी है, आगे इतनी बैंडविड्थ अवेलेबल भी है या नहीं. सो देयर इज सम टाइम स्पेंट इन दैट. Remember, you have time in the vertical axis. So some time is spent in that for determining whether we have resource available or not. So processing time is spent in here. वापसी के ऊपर जो है आपको वो processing time जो है वो spend करने की जरूरत नहीं है. Boom, you already have made the reservation. सिर्फ all the way from end you are sending an acknowledgement back कि भाई आपका काम हो गया है, आप अब डेटा भेज सकते हैं. ठीक है? So that's why it is shown like that. Otherwise there is no magic in this. Okay. Gibran, you have a question? Please go ahead and ask.
सर जब कोई फेलियर हो जाती है, do you have to resend all the data? हाँ, so अगर कोई फेलियर हो जाती है, do you have to resend all the data? Now it depends upon कि if you are sending the entire amount of data as a single chunk, ऐसा होता नहीं है. बहुत बड़ा अगर डेटा होगा, बहुत बड़ी फाइल होगी, लेट्स से 1 टेराबाइट फाइल है, आप उसको एक साथ एक चंक में नहीं भेजेंगे, आप उसको डिवाइड करती हैं पीसेस के अंदर. नाउ वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट पैकेट स्विचिंग. पैकेट स्विचिंग इज डिफरेंट. I can still divide the data into smaller chunks and send those chunks. So जितना चला गया वो चला गया, जितना नहीं गया वो आपको दोबारा भेजना पड़ेगा. I will give you an example of audio connection, voice connection जो आपके घर से लैंडलाइन फोन से होता है. किसी से आप बात कर रहे हैं, ठीक है, बात करते 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 लेट्स से कि something happens in the telephone network, और वहां पे जिस स्विच के थ्रू आप जा रहे थे, जिस टेलीफोन एक्सचेंज के थ्रू आप जा रहे थे, वो टेलीफोन एक्सचेंज किसी वजह से डाउन हो जाता है. ठीक है, डाउन हो गया या उसमें कुछ सर्किट फॉल्ट आ गई, कुछ इस तरह की चीज हुई, कनेक्शन ड्रॉप हो जाएगा. तो आपने जो बातें कर ली हैं वो कर ली हैं, वो इन्फॉर्मेशन चली गई है. ठीक है, उसके बाद आप दोबारा से जब एस्टैब्लिश करेंगे, दोबारा डायल कर लेंगे. कॉल ड्रॉप हो गई तो आप दोबारा डायल करेंगे. जब दोबारा डायल करेंगे तो आपको बात अब शुरू से नहीं शुरू करनी पड़ेगी. अब आपको बात जो है वो यहाँ पे आप थे, वहां पे आप कहेंगे कि अच्छा यार वो पहले आपकी आवाज नहीं आई थी, दोबारा रिपीट कर दें, फिर दोबारा आप रिपीट करके आप भेज देंगे. So it's exactly the same thing. जो इन्फॉर्मेशन चली गई है वो तो चली गई है, जो नहीं गई है वो आप दोबारा से भेजेंगे. Does that make sense? Yeah. ठीक है. So let's move on. So circuit switching, we saw the pros and cons. कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान है. पैकेट स्विचिंग के, जो सर्किट स्विचिंग के फायदे हैं वो पैकेट स्विचिंग के नुकसान है, जो सर्किट स्विचिंग के नुकसान है वो पैकेट स्विचिंग के फायदे हैं. So we'll talk about packet switching. What happens in the case of packet switching? By the way, in the case of circuit switching, you can divide the large amount of data into smaller chunks, और circuit establish करके वो chunks को भेज सकती हैं. That does not make it so called packet switching. Packet switching के अंदर ना सिर्फ ये कि आप एक बड़े डेटा को आपने स्मॉलर पैकेट्स में डिवाइड किया है, बल्कि dividing that big amount of data, big large word file या large movie file that you are sending from source to destination, ना सिर्फ आपने उसको पैकेटाइज किया है, बल्कि आपने पैकेटाइज करने के बाद आपने नीचे नेटवर्क पैराडाइम भी चेंज किया है. आपने ये भी कहा है कि स्टैटिस्टिकल मल्टीप्लेक्सिंग होगी, which means के if you are not using the network, if you don't have any packets to send, somebody else can use those resources to send the packet. So in the case of packet switching, you have a switch, you don't establish a circuit as we did in the case of a circuit switched network. यहाँ पे जो पैकेट स्विच है आपका, ये सर्किट स्विच नहीं है, ये पैकेट स्विच है. ये क्या करेगा, ये पैकेट रिसीव करेगा one after the other, and these packets will be sent towards the destination. How it will do that? This switch will take each packet, open up the packet, within the packet it would be written what is the destination. कोई उसका destination IP address लिखा होगा, that 32-bit number would be written within the packet itself. पैकेट के अंदर ही लिखा हुआ होगा. स्विच देखेगा उस 32-bit नंबर को और क्या करेगा, स्विच के पास एक टेबल होगा. वी डोंट नो कि वो टेबल कहां से आया है, किसने. We will find out before the end of the course, well before the end of the course, हमें पता चल जाएगा वो टेबल कहां से आई है. लेकिन इमेजिन करें कि किसी ऑरेकल ने कहीं से जो है ना इसको इल्हाम हुआ है, इसने जो है वो टेबल बना लिया. इस स्विच के पास वो टेबल है, उस टेबल के अंदर लेफ्ट के ऊपर आपके आईपी एड्रेसेस लिखे हुए हैं, राइट पे लिखा हुआ है कि इसको जो है कौन से इंटरफेस पे भेजना है. इंटरफेस नंबर 1 2 3 4 5 6 जितने भी इंटरफेसेस हैं स्विच के आउटगोइंग, यहाँ पे सिर्फ 2 ही दिखाए गए हैं. सो व्हिच इंटरफेस डू आई नीड टू सेंड दिस पैकेट टू. सो स्विच ने पैकेट को खोलना है, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस निकालना है बीच में से, और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस सोर्स ने डाला हुआ है. सोर्स ने डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस पैकेट के बीच में लिख दिया हुआ है, वो 32-bit नंबर, पार्ट ऑफ द डेटा, उसको हम हेडर कहते हैं. सो उस हेडर को देखेगा और उस हेडर को देख के वो अपने टेबल में मैच करेगा. टेबल में मैच करने से उसको पता चल जाएगा इसको कौन से इंटरफेस पे भेजना है, वो उस इंटरफेस पे भेज देगा. उस इंटरफेस पे भेजेगा तो नेक्स्ट स्विच पे चला जाएगा, वो भी यही काम करेगा और अगले इंटरफेस पे भेज देगा. वो स्विच भी यही काम करेगा until it reaches the switch which is connected to the destination. वो भी यही काम करेगा और destination के पास directly पैकेट को भेज देगा. So does this process of
टेकिंग अ पैकेट फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, सोर्स ने आईपी एड्रेस पैकेट के बीच में डाल दिया, पैकेट स्विच को भेज दिया, जिस स्विच के साथ वो कनेक्टेड है, उसने पैकेट ओपन किया, आईपी एड्रेस देखा, टेबल में कंसल्ट किया, पता चला कहाँ पे भेजना है, वहां पे भेज दिया, नेक्स्ट स्विच के पास चला गया, नेक्स्ट स्विच ने वही काम किया, पैकेट खोला, आईपी एड्रेस को अपने टेबल में मैच किया, उसका कोई और टेबल है, उसने अपने पास मेमोरी में स्टोर किया हुआ है, अपने टेबल में मैच किया, पता चला कौन से इंटरफेस पे भेजना है, नेक्स्ट स्विच पे भेज दिया, and so on and so forth until it reaches the destination. Is everyone clear about this? Is the very basics of packet switching. Is everyone clear about कि पैकेट किस तरह सोर्स से डेस्टिनेशन तक फॉरवर्ड होगा? Are you clear? Yes or no? Yes or no? Please show feedback. Yes or no? There are 18 people. I would like some people to say yes. If somebody doesn't understand as yet, वो no कह दें आप, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है? So you can write in the chat window or you can just say yes by using this non-verbal feedback. ये जो participants की list में आती है, participants पे click करेंगे तो बिल्कुल नीचे जहाँ पे raise hand आता है वहाँ पर आपको yes का बटन भी एक नजर आएगा और no का भी आएगा. So click on yes if you understand कि पैकेट किस तरह source से destination पे जा रहा है, and click no if you want me to explain it again. Okay, most people are okay with it. बाकी लोगों ने जवाब ही नहीं दिए, so I'm just going to clear the feedback now. So hey, do you have a question? Your hand was raised. Yes sir. जी सर ये हो सकता है कि sometimes a packet reaches a switch और उसके पास कोई connection ही available ना हो, ये हमेशा ही available होता है आगे? उसके इंटरफेस तो आगे कनेक्टेड होते हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है, जो आपने सवाल पूछा है इसको मैं जरा थोड़ा चेंज कर देता हूँ, ऐसा हो सकता है कि वो स्विच के पास पहुंचे है और स्विच के पास जो है वो प्रोसेस करने की पावर नहीं है, उसके पास जो प्रोसेसर लगा हुआ था वो बहुत स्लो था, वो अभी और पुराने पैकेट्स को जो है वो प्रोसेस कर रहा है, तो वो कहेगा भाई मेरे पास तो अभी प्रोसेसिंग का टाइम नहीं है, आपको मैं ड्रॉप कर देता हूँ, ठीक है? So yeah, this can happen. This can definitely happen. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. Let's say 1 gigabit per second के ऊपर एक लिंक है, उसके ऊपर पैकेट्स आ रहे हैं. एक पैकेट होता है अबाउट 1000 बाइट्स का, 1000 बाइट्स का, so which is 8000 bits. So स्विच के पास जो एक पैकेट रिसीव होता है, तो इमेजिन कर लें कि अगर 1 गीगाबिट्स पर सेकंड के ऊपर आ रहा है तो 8000 बिट्स को आने में कितना टाइम लगेगा? So only very small period of time, microseconds or nanosecond, few nanoseconds. So अगर few nanoseconds अगर लग रहे हैं तो उतनी देर में स्विच ने जो है ना वो मेक श्योर करना है कि वो पुराने कामों से फारिग हो गया, मींस कि पहले जो पैकेट्स थे उनको उसने प्रोसेस कर लिया. So this switch should have very fast processor. तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अपने नेटवर्क कार्ड की स्पीड तो बढ़ाता चला जाऊं और अंदर स्विच में जो है वो प्रोसेसर जो है वो पुराना सा लगा हुआ है, ऐसा हो नहीं सकता. मुझे अगर स्पीड बढ़ानी है तो दैट मींस आई विल बी रिसीविंग डेटा वेरी फास्ट, I will be receiving packets very fast, and since I'm receiving packets very fast, I should be able to process them very fast. Otherwise जो है वो choking हो जाएगी और ये packets जो है वो मुझे drop करने पड़ेंगे. Now it might also happen कि several packets will arrive from all over the place simultaneously. तो switch को जो है ना वो थोड़ी देर के लिए उनको buffer करना पड़ेगा. Circuit switch में ऐसा नहीं होता था. सर्किट स्विच में ऐसा नहीं होता, तो वहां तो पूरा का पूरा रास्ता आपके पास अवेलेबल है. आपके पास कभी ऐसा होगा ही नहीं कि आप इतनी ज्यादा ट्रैफिक भेज दें कि स्विच हैंडल नहीं कर सकेगा. यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि स्विच की कैपेसिटी से आप ज्यादा पैकेट्स भेज देंगे. मल्टीपल पीपल कैन सेंड द पैकेट्स हियर. सो फॉर एग्जांपल इफ देयर इज अ स्विच ऑन लम्स नेटवर्क, लम्स में 4-5 हजार नोड्स हैं, अगर साइमल्टेनियसली सब के सब जो है वो चैंपियंस लीग का फाइनल हो रहा है, पैकेट्स चले गए हैं वहां पे, उसको देख रहे हैं, too much traffic, so it is possible that there are lots of traffic which are packets which are being received by the switch. तो switch को जो है वो शायद कुछ पैकेट्स थोड़ी देर के लिए बफर करने पड़ जाए, which means कि उसको कहीं मेमोरी में थोड़ी देर के लिए स्टोर करने पड़ जाए before it can process them. So every packet switch will have that kind of a buffer जिसके अंदर वो पैकेट्स को डाल देगा. तो बफर हो सकता है थोड़ा सा फुल हो जाए, फिर वो आहिस्ता खाली होता जाएगा. लेकिन अगर पीछे से बहुत तेज ट्रैफिक आती गई तो एक टाइम आएगा बफर फुल हो जाएगा और स्विच को जो है वो पैकेट्स ड्रॉप करने पड़ जाएंगे. ठीक है, सर्किट स्विच में ऐसा नहीं होता था, ये सिर्फ पैकेट स्विच के अंदर होगा. ओके, so in the case of packet switch, each packet will contain the destination IP address.
Each packet will contain the destination IP address and each packet will be treated independently. हर पैकेट के साथ अलग-अलग independently काम हो रहा है, ठीक है। और इसका फायदा ये है कि अगर कोई प्रॉब्लम आ गई है, एक स्विच डाउन हो गया है, तो सर्किट स्विच के केस में रिमेंबर हमें ऑल द वे सोर्स टू डेस्टिनेशन दोबारा सर्किट में एस्टैब्लिश करना पड़ा था। पैकेट स्विच में ऐसा नहीं होगा। एक प्रॉब्लम आ गई, कोई बात नहीं, राउटर्स आपस में जो है वो बातचीत करके किसी तरह वो अपने टेबल्स को एडजस्ट करेंगे क्विकली से, और फिर जो नेक्स्ट पैकेट आएगा वो उस ट्रबल से बच बचा के दूसरी साइड से कहीं से निकल जाएगा। यू विल हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पाथ फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन इन एनी नेटवर्क, जो भी हाईली कनेक्टेड नेटवर्क होगा। तो ये पैकेट अपना रास्ता ढूंढ लेगा कहीं और से जाने के लिए, डेस्टिनेशन तक जाने के लिए। ओके, सो ये उसका फायदा हो जाएगा। नाउ so we will need buffers in packet switches to absorb ट्रांजिएंट ओवरलोड्स। ऐसा हो सकता है कि ट्रांजिएंट ओवरलोड्स आ जाए। अगर परमानेंट ओवरलोड आ गए फिर तो पैकेट्स ने ड्रॉप होना ही होना है, फिर तो बहुत पैकेट्स ड्रॉप होने वाली हैं। लेकिन ट्रांजिएंट ओवरलोड अगर आ गए हैं तो दैट्स ओके, हम उनको बफर कर लेंगे, ठीक है। सो पैकेट स्विचिंग के व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स? वही प्रोज हैं जो कॉन्स थे सर्किट स्विच नेटवर्क के। There is a efficient use of network resources, okay, simpler to implement। हर बस पैकेट को देखना है, उसको खोल के डेस्टिनेशन देखना है और आगे भेज देना है। No need to establish a circuit, no need to tear down a circuit। कोई सर्किट बनाने की जरूरत ही नहीं है। And it is robust and can route around the trouble, as we explained कि अगर कोई ट्रबल आ जाती है तो किसी दूसरे रास्ते से पैकेट्स चले जाएंगे। हो सकता है कुछ पैकेट्स ड्रॉप हो जाएं एंड वो विल टेक केयर ऑफ दोस पैकेट्स, जो अगर कुछ ड्रॉप हो गए 2-4 तो उनको हम दोबारा भेजेंगे किसी तरह से। वेल अगर दोबारा भेजना है तो सोर्स और डेस्टिनेशन के दरमियान कोई मुआहदा होना चाहिए। सो देयर हैज टू बी एन एग्रीमेंट। कैसे पता चलेगा कि कौन सा पैकेट ड्रॉप हुआ है? व्हिच मींस कि आई मस्ट नीड टू नंबर द पैकेट। सो वी विल सी लेटर ऑन इन फ्यू लेक्चर्स के पैकेट्स को हम नंबर्ड भी करते हैं। एंड you know we'll develop a protocol के जिसमें अगर कुछ पैकेट्स ड्रॉप भी हो जाएं तो आपको वो दोबारा भेजने पड़ जाए। Now पैकेट स्विच के what are the cons of packet switch network? So सबसे पहले तो हमने कहा था कि ये it's a unpredictable performance। हमें पता नहीं है कि पैकेट कौन सा रास्ता लेके जाएगा, you know उसको बफर में कितनी देर इंतजार करना पड़ेगा। When will it reach the destination? हो सकता है बफर में ज्यादा इंतजार करना पड़े। There are maybe 15 switches between the source and destination। हर स्विच के बफर में, हर स्विच के बफर के अंदर उसको कुछ थोड़ी देर रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम उसको डिले मिल जाए और कुछ इंतजार करना पड़ जाए। सो दैट मींस आई विल नेवर बी एबल टू गारंटी ये पैकेट सोर्स से डेस्टिनेशन तक कब पहुंचेगा। ओके, या पहुंचेगा भाई या नहीं पहुंचेगा, या पहुंचेगा भी या नहीं पहुंचेगा। हो सकता है नहीं पहुंचे, हो सकता है बफर ओवरफ्लो हो जाए किसी एक स्विच का और बफर फुल हो गया तो फिर उसको कुछ पैकेट्स ड्रॉप ही करने पड़ेंगे। वो कहेगा यार इनको तो मैं प्रोसेस ही नहीं कर सकता। So this will require lots of buffer management and congestion control at each switch. So we will talk about buffer management and congestion control in the later part of the course. Okay? So should we do packet switching or circuit switching? On demand, which is packet switching, or reservation based, which is circuit switching? टेलीफोन नेटवर्क के ऊपर चलें या इंटरनेट वाले स्टाइल पे चलें? Why one over the other? So for that, to explain that, let's consider an example. एक example consider करते हैं. Let's say we have a link which is operating at a speed of 1 megabit per second, which means कि at every instant of time, very important to realize, ये बड़ी important बात है कि when I say कि 1 megabit per second link है, इसका मतलब ये है कि 1 megabit per second ये हमेशा 1 megabit per second है। चाहे मैं यूज कर रहा हूं, चाहे आप यूज कर रहे हैं, चाहे कोई और यूज कर रहा है। अगर हम आपस में मल्टीप्लेक्सिंग भी कर रहे हैं, नॉट स्टैटिस्टिकल मल्टीप्लेक्सिंग, अगर हम मल्टीप्लेक्सिंग भी कर रहे हैं तब भी मुझे भी 1 megabit per second मिलेगी, आपकी बारी आएगी तो आपको भी 1 megabit per second मिलेगी। जिसकी भी बारी आएगी, जिसकी भी टाइम स्लॉट आएगी, उसको पूरे 1 megabit per second की बैंडविड्थ मिलेगी, which means कि you can pump 1 megabits of data in 1 second, 1 megabits of data in 1 second. So this is the transmission related to the transmission. Okay, in 1 second you can inject 1 megabit of data into this link, or you can extract 1 megabit of data into this link, out of this link. So let's try to divide this 1 megabit per second link into 10 slots. 10 slots में divide करते हैं. Hypothetical number मैंने use किया, आप कुछ और भी कर सकते हैं इसमें. So these slots will get repeated after
after these 10 slots are finished. So 1 2 3 all the way up to 10, and then 1 2 3 all the way up to 10, फिर 1 2 3 up to 10. So let's say कि हम 1 से लेके 10 तक ये जो slots हैं ये एक 1 सेकंड की रखती हैं, ठीक है. ये भी hypothetical time pick किया है 1 सेकंड. ये नॉर्मली इतना होता नहीं है, इससे बहुत कम होता है अगर स्पेशली ऑडियो डेटा वगैरह भेज रहे हैं तो. सो हम एक फ्रेम बनाते हैं. सो इस तरह का फ्रेम बनेगा. सो ये ब्लू कलर्ड फ्रेम, ये जो आपको नजर आ रहा है 1 से लेके 10 तक, this is one frame whose duration is 1 second or equal to 10 time slots. Now again, very important to realize that in each of the time slot, मैं पहली टाइम स्लॉट किसी एक को दे दूंगा, दूसरी टाइम स्लॉट किसी दूसरे को, तीसरी किसी तीसरे को, चौथी किसी चौथे को, एंड 10वीं किसी 10वें को. each one of those senders will be able to send at 1 megabit per second. इतने उसमें भेज सकते हैं, ठीक है. नाउ रियलाइज कि द ड्यूरेशन ऑफ द फ्रेम फ्रॉम हियर टू हियर इज 1 सेकेंड. यहां से 1 से लेके 10 तक जो आपकी टाइम स्लॉट्स हैं, ये ब्लू वाली जो शो की हुई हैं, आप कितना डेटा भेज सकते हैं इतनी देर में? प्लीज राइट योर आंसर इन द चैट विंडो. हाउ मच डेटा कैन यू सेंड इन these 10 time slots all together? ये blue वाली time slots में आप यहां से लेके इस जगह से लेके यहां तक कितना डेटा भेज सकते हैं? कितना डेटा भेजा जा सकता है? 10 megabits per second is not the right answer. Data is never in megabits per second. Think about the units. यूनिट्स क्या होंगे? कितना डेटा भेज सकते हैं? डेटा विल ऑलवेज बी इन बिट्स और बाइट्स. सो वी हैव अ लिंक व्हिच इज ऑपरेटिंग एट 1 मेगाबिट पर सेकंड, और वो जो लिंक है उसमें हमने ये वर्चुअल टाइम स्लॉट्स बनाई हुई हैं, ठीक है. और यहां से यहां तक 1 से लेके 10 तक आपके पास 1 सेकंड है. 1 सेकंड में आप कितना डेटा भेज सकते हैं? 1 सेकंड में इस लिंक के ऊपर आप 1 मेगाबिट्स से ज्यादा डेटा नहीं भेज सकते, बिकॉज दिस लिंक इज ऑपरेटिंग एट 1 megabits per second, which means on this link you can send 1 megabit of data. चाहे वो एक बंदा भेज दे, चाहे 2 भेज दें, चाहे 10 भेज दें, चाहे 50 भेज दें, मिल के भी जो है वो इस लिंक के ऊपर 1 megabit से ज्यादा डेटा नहीं भेज सकते एक सेकंड के अंदर. Since the duration of this frame, this blue frame is 1 second, so the total data in all the slots that I can send is 1 megabits. 1 megabits. 1 megabit से ज्यादा हम नहीं भेज सकेंगे. Is that clear to everyone? कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें. Any question on that? सर बाकी डेटा बफर में स्टोर होगा? अगर 10 कोई बंदे डेटा भेज नहीं रहे है, हैं कोई डेटा नहीं है, कोई बफर नहीं है अभी. मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये लिंक है आपके पास जो 1 मेगाबिट पर सेकंड का लिंक है. इसका मतलब है कि एक सेकंड में आप 1 मेगाबिट का डेटा भेज सकते हैं. 1 मेगाबिट का डेटा आप एक सेकंड में भेज सकते हैं. इस फ्रेम का टाइम 1 सेकंड है. इस फ्रेम में मैक्सिमम कितना डेटा भेजा जा सकता है? 1 मेगाबिट. इससे ज्यादा डेटा नहीं भेजा जा सकता. तो सवाल जो है अभी ये नहीं है कि आप 5 मेगाबिट अगर भेज देंगे तो बाकी कहां जाएगा. नहीं, सवाल ये है कि एक सेकंड के अंदर कितना डेटा मैक्सिमम भेज सकते हैं. एंड द आंसर टू दैट इज 1 मेगाबिट्स. ओके, ऑलराइट. नाउ थिंक अबाउट इट. दिस फ्रेम गेट्स रिपीटेड. ये स्लॉट्स जो हैं ये रिपीट हो रही हैं. और बाय द वे ये कोई नंबर ऐसे लिखे हुए नहीं है, ये सिर्फ हमारे जहन में है कि हमने जो है ना ये टाइम को डिवाइड कर लिया, वर्चुअली जो है अपने टाइम को डिवाइड कर लिया. सो मैं ये कर सकता हूं कि ये टाइम स्लॉट नंबर 1 जो है मैं एक यूजर को दे दूं, टाइम स्लॉट नंबर 2 दूसरे यूजर को दे दूं, टाइम स्लॉट नंबर 3 तीसरे यूजर को दे दूं, which means के I can do a sharing or multiplexing, not statistical multiplexing. I can do a multiplexing here, which is still a used in circuit switch network. So अगर मैं multiplexing इसकी कर लूं तो what are the mechanisms for that? ठीक है. So let's assume ये बताएं कि स्लॉट की ड्यूरेशन कितनी है. एक स्लॉट की ड्यूरेशन कितनी है? ये स्लॉट नंबर 1, इसकी ड्यूरेशन कितनी है? एंड व्हेन आई से ड्यूरेशन कितनी है, द आंसर शुड बी इन सेकंड्स. और ना आपके ध्यान में आना चाहिए इसके यूनिट क्या होंगे. ड्यूरेशन के यूनिट जो हैं वो सेकंड्स होते हैं. व्हाट वुड बी द ड्यूरेशन ऑफ 1 स्लॉट?
what would be the duration of one slot? So 10 slots की ड्यूरेशन 1 सेकंड है, तो एक स्लॉट की ड्यूरेशन कितनी होगी? 1/10 सेकंड या 0.1 सेकंड या 100 मिली सेकंड. सो पीपल हु आर राइटिंग 0.1 सेकंड और 100 मिली सेकंड, थैंक यू वेरी मच. So the duration of the slot is 10 seconds. The slot duration is 1/10 second or 100 millisecond or 0.1 second. Okay? Now let me allocate each slot to each user. Slot number 1 एक यूजर को दे दी, slot number 2 दूसरे यूजर को दे दी. एक स्लॉट के अंदर रिमेंबर हमने पहले कहा था ये लिंक जो है 1 मेगाबिट पर सेकंड लिंक है. इसका मतलब है हर स्लॉट के अंदर आपको जो है ना 1 मेगाबिट पर सेकंड मिल रहा है. 1 मेगाबिट पर सेकंड. किसी भी टाइम पे मैं इस लिंक को देख लूंगा. एट दैट टाइम यू कैन इंजेक्ट डेटा इनटू दिस लिंक एट अ रेट के जो यूनिट्स हैं मेगाबिट्स पर सेकंड होंगे या किलोबिट्स पर सेकंड होंगे या गीगाबिट्स पर सेकंड होंगे. सो रियलाइज के आपसे रेट का पूछा जा रहा है या ड्यूरेशन का पूछा जा रहा है या अमाउंट ऑफ डेटा का पूछा जा रहा है. अमाउंट ऑफ डेटा विल बी इन बिट्स और बाइट्स. रेट विल बी बिट्स पर सेकंड और मेगाबिट्स per second or kilobits per second. Duration will be in seconds. So be very careful about the units of the quantity that is being asked. Okay. So एक सेंडर जिसको एक स्लॉट हमने एलोकेट की हुई है, स्लॉट नंबर 1 या स्लॉट नंबर 2 या स्लॉट नंबर 3, कोई एक सेंडर ले लें, वो फुल रेट पे भेजेगा. जब भी उसको लिंक मिल गया, जब भी उसकी बारी आई थोड़ी सी देर के लिए उसकी बारी आई और उसके बाद दोबारा 1 सेकंड के बाद आएगी. ये ब्लू वाले फ्रेम के बाद उसके रेड वाले फ्रेम के अंदर बारी आएगी. लेकिन जब उसकी एक दफा बारी आई एक स्लॉट के अंदर जब भी वो डेटा भेज रहा होगा वो 1 मेगाबिट पर सेकंड पे भेज रहा होगा. कोई दूसरा यूजर वो भी 1 मेगाबिट पर सेकंड पे भेज रहा होगा. लेकिन ये है कि उनकी बारी थोड़ी देर के बाद आ रही है. ठीक है. ऐसा नहीं है कि यूजर 1 और यूजर 2 जो है वो साइमल्टेनियसली भेज रहे. नहीं, पहले यूजर 1 की बारी है, फिर यूजर 2 की बारी है, फिर यूजर 3 की, फिर 4 की, ऑल द वे अप टू यूजर 10 की. ठीक है. सो वन यूजर विल सेंड at full rate in a slot. One sender will send at a full rate in one slot. अब हमारा सवाल है जिसका जवाब आप ग्रुप चैट के अंदर देंगे कि एक सेंडर it can send data within the slot that it is allocated to that user. एक यूजर जिसको एक स्लॉट एलोकेटेड हुई है, उस एक स्लॉट के अंदर जिसका ड्यूरेशन आप सबने मुझे बताया कि 1/10 सेकंड है, उस एक स्लॉट के अंदर एक यूजर कितना डेटा भेज सकता है. Again, units would be bits. कितना डेटा भेज सकता है? In one slot, how much data that user can send? In one slot, how much data the user can send? Think about it. Slot की ड्यूरेशन हमें पता है 1/10 सेकंड है और आप भेज रहे हैं 1 मेगाबिट पर सेकंड के ऊपर. सो इसका मतलब है कि अगर एक सेकंड में आप 1 मेगाबिट्स भेज सकते हैं तो 1/10 सेकंड में 1/10 मेगाबिट भेज सकते हैं आप. सो अ सेंडर कैन सेंड 0.1 megabit which is the same as 100 kilobits in one slot. एक स्लॉट के अंदर 100 kilobits भेज सकते हैं. ठीक है. Is everyone clear about that? Is everyone clear about that? अगर नहीं है तो अभी सवाल पूछ लें. किसी का क्वेश्चन इसके बारे में? कोई क्वेश्चन नहीं? Okay, now if that is the case, then we will move on. Let's consider this example for both circuit switching and packet switching. दोनों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इसी एग्जाम्पल को. Once again, एक लिंक है आपके पास 1 मेगाबिट पर सेकंड के स्पीड पे ऑपरेट कर रहा है. उसमें आपने ये 10 स्लॉट्स बनाई और फिर उनको रिपीट कर दिया अपने ज़हन के अंदर. ठीक है. It's really the time is divided into chunks. तो हम ये कर सकते हैं कि ये जो 0.1 सेकंड की जो स्लॉट है वो एक यूजर को एलोकेट करते जा रहे हैं. 0.1 सेकंड की स्लॉट एक यूजर को एलोकेट करते जा रहे हैं. Now, if we consider the example of circuit switching, I will allocate slot number 1 to some user number 1, and then this will get repeated after the 10 slots. So circuit switching, how many users I can accommodate in this kind of a setting. ये ऊपर मैंने दोबारा से तस्वीर बना दी है कि एक फ्रेम है जो 10 स्लॉट्स पे
कंसिस्ट करता है और फिर उसके बाद वो 10 स्लॉट्स रिपीट हो जाती हैं. Slot number 1 is allocated to user number 1, which gets repeated after 10 time slots and then repeated, then repeated. So user 1 can only send in slot number 1, user 4 can only send in slot number 4, which will get repeated after 10. Okay. Now, how many users can be supported? How many users can be supported in the case of circuit switched network? Circuit switching है, कितने users maximum support किए जा सकते हैं? जल्दी से बता दें इसका आंसर. ग्रुप चैट में मैं कितने users accommodate कर सकता हूँ? Aisha says number of slots, 10 users. 10 users. 10 users. हमारे 10 slots हैं तो 10 user accommodate हो सकते हैं. Obviously 10 users accommodate हो सकते हैं और हर यूजर को कितने रेट के ऊपर डेटा भेजने की इजाजत है? ऑन एवरेज हर यूजर को कितने रेट पे डेटा भेजने की इजाजत है? देखें टोटल 1 मेगाबिट्स पर सेकंड है. टोटल 1 मेगाबिट पर सेकंड है तो वन यूजर विल बी एबल टू सेंड 0.1 मेगाबिट पर सेकंड. हमने देखा था कि वो एक स्लॉट में भी 0.1 मेगाबिट भेज सकता था, लेकिन देखें एक दफा उसकी बारी आ गई, अब वो 1 सेकंड से पहले बारी दोबारा नहीं आने वाली. यूजर 1 की बारी अगर हमें यहाँ पे मिल गई है, उसने उसी के अंदर जो है 0.1 मेगाबिट्स भेज दिया है, उसके बाद अब उसकी बारी दोबारा नहीं आएगी जब तक उसकी बारी ये दोबारा स्लॉट नंबर 1 ना आ जाए. सो इस पूरे 1 सेकंड के अंदर वो थोड़े से टाइम के लिए सिर्फ अपना डेटा भेज सकता था जब उसकी स्लॉट की बारी थी. एंड देन during that time slot it was sending data at a rate of 1 megabit per second, but since the duration of the slot is 0.1 second, so 0.1 megabits data उसने भेजा था, and that 1.1 megabit means कि वो repeat हो जाएगा. So maximum 10 users can be supported, 1 per slot, and average data rate for any user is 0.1 megabit per second or 100 kilobit per second. एक ही बात है, 0.1 megabit per second or 100 kilobits per second. All right. So what if each user is active only 10% of time? Too bad. ये जो हमने circuit switch में जो खराबी पड़ी थी ना कि अगर traffic is sporadic, if the traffic is sporadic, if the traffic is bursty, that you send data for some time and then you are idle for a long period of time. So the problem with that was कि the resource is allocated to you. ये time slot number 4 जो user 4 को मिली हुई है ये बस उसी की है, इसमें और कोई transmit नहीं कर सकता. User 4 is active 10% of the time, then user 4 is wasting 90% of the money. वो 90% of the money अपनी waste कर रहा है, तो वो 10% of the time के लिए इस्तेमाल कर रहा है. In the case of circuit switching, okay, slot number 4 which is allocated to user number 4 cannot be used by anybody else. Okay? Now let's compare it with a packet switching. Once again, let's assume that each user is active only 10% of the time. Same in the case of circuit switching. Let's assume that each user is active only 10% of the time. Now we do not allocate slots to users. We do not say that this slot number 1 is for user number 1, slot 2 is for user number 2, and then it will get repeated after every 10 time slots. Circuit switching में तो हम ऐसा कहते हैं, लेकिन पैकेट स्विचिंग में हम ऐसा नहीं कहते. पैकेट स्विचिंग में हम क्या कहते हैं? पैकेट स्विचिंग में हम ये कहते हैं कि ये स्लॉट्स हैं आपके पास अवेलेबल, these are virtual slots, anyone can send in the slots. तो ऐसा हो सकता है कि 2, 3 लोग, 4 लोग इकट्ठे ही एक स्लॉट में भेजने की कोशिश करें, नहीं भेज सकेंगे. एक स्लॉट में एक से ज्यादा यूजर नहीं भेजेगा, but that's okay. So let's say each user is active only 10% of the time. So we say that the chances that a user will be active, the probability that one user will be active is going to be 0.1. Everyone is okay with that? We say that if the user is active only 10% of the time, then the probability that that user is active is only 0.1, is only 0.1. 90% chance this user will be inactive because 90% of the time this user is inactive. Okay. Now let's try to accommodate more users. Circuit switching में हमने आप सबने बताया कि 10 से ज्यादा यूजर नहीं आ सकते क्योंकि 10 टाइम स्लॉट्स हैं and they get repeated. हमने एक यूजर को टाइम स्लॉट एलोकेट कर दी तो वो फ्रेम टू फ्रेम रिपीट होती जाएगी. नॉट इन द केस ऑफ पैकेट स्विच नेटवर्क. पैकेट स्विच में यूजर के पास जब डेटा होगा वो भेज देगा, जब डेटा होगा वो भेज देगा. द प्रोबेबिलिटी a user is active is 0.1 and this user
This user can send data whenever it has data. कोई इसके लिए allocated slot नहीं है. ऐसा नहीं है कि user number 4 सिर्फ 4 में भेज सकता है. नहीं, वो कहीं भी भेज सकता है जब भी उसके पास data होगा. ठीक है. Now let's try to accommodate more users. 10 से ज्यादा users को accommodate करते हैं. ठीक है. सर्किट स्विच में हमने देख लिया था कि 10 से ज्यादा यूजर आ ही नहीं सकते थे. क्यों नहीं आ सकते थे? क्योंकि हमने डेडिकेट करना था. हमने टाइम स्लॉट डेडिकेट करनी थी. Now I don't want to dedicate the time slot because it is packet switching. In this case, I will do what we call statistical multiplexing. Not just multiplexing. जो हमने multiplexing की थी वो सर्किट स्विचिंग के केस में की थी, जहां पे मैंने एक ही लिंक के ऊपर 10 लोगों को दे दिया था, लेकिन बारी बारी दिया था. ठीक है. But in the case of packet switching, I want to do statistical multiplexing, which means whenever you have data to send, you can send it. So I can accommodate more users. Let me try to accommodate, let's say 35 users. Let's accommodate 35 users, and each of these users is active 10% of the time. 10% of the time. Now you might say कि ऐसा हो सकता है कि 4 लोग जो है वो एक ही स्लॉट में भेजने की कोशिश करें, तो ये तो मसला हो जाएगा, क्योंकि 4 तो नहीं भेज सकते. एक स्लॉट में तो एक ही भेज सकता है. ठीक है. Aisha, you have a question. Let me just finish the thought and we'll take your question then. Okay. So let's try to accommodate these 35 users. Each one of them is active only 10% of the time. So let's try to find the probability that you have 10 active users in 1 second. 10 active users, more than 10 active users. I know I can accommodate 10 active users in 10 time slots. 10 time slot के अंदर मैं 10 users को तो accommodate कर सकता हूँ. लेकिन what is the probability that you have more than 10 active users? This probability turns out to be very, very, very small. Simultaneously इतने users active ही नहीं होंगे. Simultaneously, it's very, very 0.04% chance that more than 10 users will be active simultaneously in 1 second duration. Okay. So in this case, I can accommodate a lot more users, and that is exactly how the internet operates. You don't have resources dedicated for people, and that is how the internet is so inexpensive, is so affordable. Packet switch networks are so affordable because they allow sharing. Unlike circuit switch networks, the telephone calls, they used to be extremely expensive. Telephone calls today over WhatsApp are free. You are only paying for a connectivity. You are not paying for the amount of duration that you are using the network. Okay. So packet switching versus circuit switching. What do we get from that example? There are 2 clear benefits of packet switching over circuit switching. One is a lot more users can be supported. Which will be statistically multiplexed. And the reason that we say statistically multiplex is कि ऐसा हो सकता है एक टाइम पे multiple users जो है वो डेटा भेजना चाहें. When multiple users want to send the data simultaneously, that means you will have to buffer the data for some of the users. Once again, going back to the explanation of packet switches versus circuit switches do not need buffers. Packet switches do need buffer, and the reason that they need buffer is because we have a resource जो 10 लोगों को हैंडल कर सकता था, लेकिन हमने उस पे 35 लोगों से पैसे ले लिए. लेकिन 35 लोग हमें पता है कि they are only active 10% of the time, so the chances that lot more users will be active simultaneously are very, very low. अगर होंगे भी तो मैं उनको accommodate कर लूंगा by providing these buffers. Okay. So a single user can occupy all the empty slots. This other benefit is, the first benefit was a lot more users can be accommodated. This was the first benefit. The second benefit is कि a single user can occupy all the empty slots. उसको अपनी बारी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा. सर्किट स्विच में यूजर नंबर 4 सिर्फ स्लॉट नंबर 4 में भेज सकता है, और स्लॉट नंबर 4 उसने यूज कर ली. अब उसकी बारी जो है 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, उसके बाद फिर दोबारा जब बारी आएगी 1 सेकंड के बाद वो फिर भेज सकेगा, उससे पहले नहीं भेज सकेगा, चाहे वो स्लॉट्स खाली भी पड़ी रहे. बट not in the case of packet switch network. In the case of packet switch network, a single user can occupy all the empty slots. अगर कोई और नहीं भेज रहा तो मैं सबकी सब स्लॉट ले लूंगा, पूरा का पूरा लिंक मेरा हुआ. ठीक है. And hence will be able to send the data quickly. So consider an example of one user which has 1 megabits of data
to send 1 megabits of data to send. एक यूजर है जिसके पास 1 megabit of data to send है, ठीक है. रिमेंबर वो लिंक हमारा कितने पे ऑपरेट कर रहा था, 1 megabits per second के ऊपर. तो आइडियली अगर ये पूरा का पूरा लिंक इस यूजर का हो तो ये 1 सेकंड में अपना पूरा डेटा भेज देगा, 1 सेकंड में पूरा डेटा भेज देगा. नॉट इन द केस ऑफ सर्किट स्विचिंग. इन द केस ऑफ सर्किट स्विचिंग, इन द केस ऑफ सर्किट स्विचिंग, इस यूजर को एक फ्रेम के अंदर सिर्फ एक स्लॉट मिलती है, 10 में से सिर्फ एक स्लॉट मिलती है. इसका मतलब है 1/10 ऑफ द बैंडविड्थ इज एलोकेटेड टू दिस यूजर. और फिर वो अपनी स्लॉट नंबर यूज करेगा, फिर उसके बाद 1 सेकंड के बाद फिर यूज करेगा. 100 किलोबाइट्स जो है वो एक भेजेगा, 100 किलोबिट्स एक स्लॉट में भेजेगा जो हमने पहले भी बताया. फिर 100 किलोबिट एक और सेकंड के बाद, फिर एक और सेकंड के बाद. सो इन द केस ऑफ सर्किट स्विचिंग इट विल टेक 10 frames or 10 seconds to send the data, to send this amount of data. 1 megabits of data भेजने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा. उसकी वजह ये है कि बाकी सारी स्लॉट जो है मेरी नहीं है, मेरी सिर्फ एक स्लॉट है, और एक स्लॉट जो है उसकी ड्यूरेशन 0.1 सेकंड है, और उस एक स्लॉट के बीच में सिर्फ 100 किलोबिट्स का डेटा भेजा जा सकता है. ये आपने सवाल का जवाब दिया था, 100 किलोबिट्स का डेटा भेजा जा सकता है. 1 मेगाबिट्स भेजने के लिए मुझे 10 फ्रेम्स इंतजार करना पड़ेगा, 10 टाइम्स स्लॉट्स लेनी पड़ेंगी, और मेरी स्लॉट जो है एक फ्रेम में एक ही दफा आती है. ओके, सो 10 सेकंड लग जाएंगे. इन द केस ऑफ पैकेट स्विचिंग it could be as quick as 1 second. The reason that I say as quick as 1 second, इसलिए ये हो सकता है कि स्लॉट्स भरी हुई भी हो सकता है 1 सेकंड से कुछ ज्यादा मिल जाए, लेकिन अगर सारी स्लॉट्स खाली होंगी तो वो सारी स्लॉट्स यूज कर सकता है. कोई डेडिकेटेड स्लॉट नहीं है किसी एक यूजर की. Every user can send the data very quickly. So that's a real advantage of packet switching versus circuit switching. And that's why internet decided to use packet switching as the connectivity paradigm, as the infrastructure for supporting the internet services. Okay. Now let's move on. We already talked about what is the network made of, switches and links which are connected in those switches. How do we evaluate a network? How do we evaluate a network? So let's do a very quick recap of what we have studied so far, and then how do we move forward. Recap and moving forward. So recap of some of the things. Oh, Aisha, you had a question. Please go ahead and ask. Yes, sir. Sir, in circuit switching, if one user has no data at a slot, so is that slot wasted? That slot is wasted. That is true. That slot is wasted. Circuit switch में that slot is wasted. That slot is complete resource dedicated to you. If you don't use it, nobody else can use it. You still have to pay for it. Nobody else Right. can use your slot. Okay. Right, sir. And sir, you said that the speed of each slot is 100 kilobits per second. But sir, the speed should be 0.1 MB divided by 0.1 second. नहीं. I did not say कि speed of each slot. There is no such thing as speed of the slot. Slot की कोई speed नहीं होती. Slot की duration है. Okay. ठीक है. Slot जो है ये time की slot है, तो इसका unit जो होगा वो seconds में होगा. तो bits per second जो है वो slot के duration का unit नहीं हो सकता. So it is possible that you are trying to say कि एक slot के अंदर यूजर किस रेट पे डेटा भेज सकता है. यूजर उसी रेट पे डेटा भेज सकता है जिस रेट के ऊपर लिंक ऑपरेट कर रहा है, विच इज 1 मेगाबिट पर सेकंड. हर यूजर अपनी अपनी स्लॉट में 1 मेगाबिट पर सेकंड के ऊपर डेटा भेज सकता है. Right. ठीक है, क्योंकि जिस यूजर के पास भी स्लॉट आ गई, टाइम स्लॉट आ गई, उस टाइम ड्यूरेशन के लिए पूरा का पूरा लिंक उसका है. उस टाइम ड्यूरेशन के लिए पूरा का पूरा लिंक उसका है, और पूरा का पूरा लिंक का मतलब है कि 1 megabit per second, which is the speed at which the link is operating, वो पूरा का पूरा लिंक उसका है. ठीक है. Right, sir. Great. Any more question on that? No, sir. जी, किसी और का सवाल उसमें हो? Okay, so recap and moving forward. So what we did so far is we talked about the internet infrastructure. Internet infrastructure देखा जिसमें end hosts होते हैं, switches होते हैं जो end hosts को connect कर रहे हैं, and links हैं, और ISPs हैं which provide these switches and links. We also talked about protocols, standards. These protocols are the languages that these switches talk to each other, or these end hosts talk to each other. And
we did not mention something which is called RFCs, request for comments, and these are the documents which contain standards. ये standards इनके अंदर लिखे होते हैं. So every switch vendor, every device vendor जिसने networking card बनाने हैं, Broadcom वाले हो गए, Juniper वाले हो गए, Huawei वाले हो गए, Cisco वाले हो गए, all of these guys, they must comply, they must conform to some standard set of requirements, and those standard set of requirements, they go into these documents which are called RFCs, request for comments. नाम से लगता है कि ये request for comments हैं, लेकिन really these are standard documents. These are standard documents. A lot of time goes into establishing these RFCs. एक internet draft बनता है, पहले उस draft की revisions होती हैं. It takes, you know, it can take a few years for an RFC to be standardized. Because once you make the standard, then everyone in the world has to conform with that. और ये last time और उससे पिछली दफा हमने explain किया था कि why everyone has to conform to that standard, because on the internet everyone needs to be able to talk to each other. एक मैं ये नहीं कह सकता कि मेरे पास ये HP का कंप्यूटर है, इसका जो नेटवर्क कार्ड है ये एक Dell के कंप्यूटर के अंदर जो नेटवर्क कार्ड लगा हुआ है उससे बात नहीं कर सकता. They must be able to talk to each other. Similarly, LUMS के नेटवर्क में Huawei के कुछ राउटर्स हैं, Juniper के कुछ राउटर्स हैं, Cisco के कुछ राउटर्स हैं. They must be able to talk to each other. अगर नहीं कर सकेंगे तो फिर हम एक सिंगल नेटवर्क नहीं बना सकते. So it is very, 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 very important that you have what we call interoperability. Interoperability, एक दूसरे के साथ ऑपरेट कर सकते हो. ठीक है? So the fundamental goal of the internet infrastructure is that you connect everyone to everyone else. Okay? We also talked about the connection paradigms. हमने circuit switch देखा with and without multiplexing. Circuit switching with and without multiplexing. And then we also talked about packet switching, which uses statistical multiplexing, which means कि जब जगह मिलेगी डाल देंगे, जब जगह मिलेगी डाल देंगे. ठीक है? Now, what we are going to do next is we are going to talk about some of the network performance metrics, and three fundamental performance metrics of network management are delay, loss, and throughput. What are these? शायद इनके नाम से हम कुछ guess लगा सकते हैं, ठीक है? But we will explain what these are. So delay is basically how long does it take to send a packet from its source to the destination. There are many delays. Part of this time that it would take to send a packet from the source to the destination. Source से destination भेजने के लिए जो time लगेगा, उस time के बहुत constituent parts होंगे. We will talk about those. लेकिन this is delay is end-to-end delay is the amount of time that it will take a packet from its source to the destination. जब आपने पहली bit भेजनी शुरू की until the आखिरी bit is received, the first bit on the wire until the last bit extracted from the wire, सोर्स ने भेजना शुरू किया, डेस्टिनेशन ने रिसीव करना खत्म कर लिया. इस दौरान जितना टाइम लगा इसको हम एंड टू एंड डिले बोलते हैं और डिले बोलते हैं, नेटवर्क डिले बोलते हैं. ओके, सो वी विल टॉक अबाउट in this in some more detail today. Okay, what is loss? What fraction of the packets sent to a destination are dropped? So we talked about packet switch network. हमने उसमें कहा कि since it is possible that you can accommodate lot more users than you have the capacity for, and the reason that you can do that is you predict that users are not going to be active 100% of the time. Users will be active 5% of the time, 10% of the time, 20% of the time, and then you accommodate more users. आप कहते हैं oh, और ज़्यादा user ले लेते हैं because the probability that all of them will be active all the time is zero. If the users are active on a small fraction of the time, you can accommodate lot more users. So for example, in LUMS, if we have 5,000 nodes, 5,000 devices which can send data to the internet, the router at LUMS is probably not able to accommodate 5,000 connections simultaneously, 5,000 people sending simultaneously. It can probably accommodate, a few hundred transmitting simultaneously, but it will still accommodate 5,000 users because not 5,000 users are simultaneously active. And we see this this thing happening at a popular event. कोई World Cup का final आ रहा है या course registration हो रही है on Zambil. You see network congestion, and the reason that you see network congestion in these popular times is because a lot more users
are trying to access the network at the same time. They are sending the traffic, sort of simultaneously. Okay? So what is loss? Loss is the fraction of packets which are sent to the destination and are dropped. And they are dropped because one of the main reasons is that the router is unable to process these packets fast enough. And the router's buffer gets filled up. वो buffer जो है वो पूरा का पूरा fill up हो जाता है और वो buffer जो है उसके अंदर और जगह नहीं होती, नया पैकेट आएगा उसको वो accommodate ही नहीं कर सकता. All right, so delay, loss, and then throughput. Throughput is at what rate, and when I say rate, it's going to be bits per second or kilobits per second or megabits per second. At what rate is the destination receiving the data from the source, from end to end, source से destination तक किस rate के ऊपर data जा रहा है? This is different from the link transmission rate. वो अभी आपको explain करते हैं. In the next 10 minutes, we will explain that. So, so as I said, the delay is the amount of time which is consumed when the sender starts sending the data and the user and the receiver finishes receiving the data. There are many components of this delay. Some of the more important components are transmission delay. We talked about that. Okay. Propagation delay. We talked about that as well. Transmission delay क्या था कि how much time does it take you to inject data into the link? ठीक है? To inject data into the link depends upon at what speed the link is operating on, 1 megabit per second or 10 megabit per second. Does not depend upon, transmission delay does not depend upon कि वो link कितना लंबा है. ठीक है? Propagation delay on the other hand depends upon how long is the link. It does not depend upon कि किस speed पे operate कर रहा है. वो 1 megabit per second पे ऑपरेट कर रहा है या 10 megabit पे या 1 gigabit per second पे ऑपरेट कर रहा है. Propagation delay is not dependent upon that. Propagation delay is the time which is associated with propagation of the electrical signal from one end to the other end. ठीक है? इसकी हमने एग्जांपल आपको दी थी कि if you have a water pipe और वो पाइप अगर मोटा होगा इसका मतलब है कि उसमें आप ज्यादा पानी इंजेक्ट कर सकते हैं, which means कि transmission is fast, transmission delay is low. ठीक है? ज्यादा पानी इंजेक्ट कर सकते हैं. इस पे डिपेंड नहीं करता पाइप कितना मोटा है, वो बताएगा आपको how much barrels of water you can inject, how much gallons of water you can inject simultaneously into this pipe. वो दूर कहीं पे जा रहा है, it doesn't matter कि वो कितनी लेंथ है उस पाइप. ठीक है? So transmission delay is related to the width of the pipe or diameter of the pipe. Okay, and the propagation delay is related to the length of the pipe, is equal to is dependent upon the length of the pipe. एक water molecule जो यहाँ से मैंने inject किया है अभी the few gallons of water जो मैंने अभी inject किए हैं उसमें एक water molecule था, वो water molecule travel करके दूसरे end पे कब पहुँचेगा? That is propagation delay. How long it would take to propagate through. ठीक है? That's the propagation delay. And we'll explain what queuing delay is. We'll explain what processing delay is. Queuing delay तो you might be able to guess कि हम packet switching के अंदर जो है वो statistical multiplexing करते हैं. So it is possible that many packets will arrive simultaneously. तो router को कुछ जो है वो अपने पास buffer करने पड़ेंगे या queue में डालने पड़ेंगे. उस queue में डालने से थोड़ा सा delay आ जाएगा, उसको queuing delay कहते हैं. Processing delay is about how much time does the switch take or router take to process a packet. उस पैकेट को खोलना है, उसके अंदर से डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस निकालना है, उसको अपने टेबल में मैच करना है और उसको टेबल में मैच करने के बाद डिसाइड करना है इसको इंटरफेस नंबर 37 पे जाना चाहिए था. ये जो प्रोसेसिंग के अंदर जो टाइम स्पेंड हुआ है, दिस इज कॉल्ड प्रोसेसिंग डिले. Okay, so a little bit more detail about these delays. So transmission and propagation delay are due to link properties. One is because of the link width, the other is because of link length. And queuing and processing delay are due to the traffic mix and the switch internals. कि वो switch कितना fast है, उसमें processor कौन सा लगा हुआ है, कितने interfaces हैं, buffer कितना है. So it's dependent upon that. Okay. So let's consider a network link here, and this network link, as I explained, the width of or diameter of this link defines the bandwidth, the link bandwidth, and this dictates transmission delay. पतला
पतला लिंक होगा, diameter is small, bandwidth is low, 1 megabit per second है as compared to 1 gigabit per second. If it is 1 megabit per second, it will take more time to transmit the data. So transmission delay higher हो जाएगा. Speed कम होती जाएगी at which the link is operating, तो time ज़्यादा होता जाएगा. So this is number of bits injected or extracted, center received per unit of time, injected or extracted per unit of time. Link bandwidth उस पर depend करती है, and this is shown here as the diameter of the pipe here. Okay. Now again realize कि pipe कितना लंबा है इस पर dependent नहीं है. Now the length of the pipe will dictate what we call propagation delay. Propagation delay is defined is dictated by the length of the pipe, and what it is dependent upon. Propagation delay किस चीज के ऊपर depend करेगा? Propagation delay depend करेगा कि pipe की length कितनी है. इस पे भी depend करेगा कि उस pipe के अंदर जो signal propagate कर रहा है या जो water flow कर रहा है उसकी speed कितनी है. जो signal propagate कर रहा है उसकी speed कितनी है. You know, a good big fraction of the speed of light. Okay? So the propagation delay is time for one signal, one bit to move through the link. ये seconds के अंदर है आपका. कितनी देर में ये दूसरी तरफ जाएगा? That's the propagation delay. That's the propagation delay. So very important to realize the difference between the transmission delay and the propagation delay. Transmission delay, propagation delay, both are the properties of the link. Transmission delay is about how fast the link is operating on. Propagation delay is how long the link is and what is the propagation speed of signal on that link. Propagation speed of signal on that link. So very, very important to realize that. Okay. Sometimes we use this quantity which is called bandwidth delay product, and bandwidth delay product is basically also a property of the pipe, property of the link. ठीक है. Delay यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम ये propagation delay की बात कर रहे हैं, और ये bandwidth जो है वो हम at what speed this link is operating on उसकी बात कर रहे हैं. Now think about it कि bandwidth delay product अगर delay ज़्यादा होगा which means the pipe is longer. अगर bandwidth ज़्यादा होगी means pipe is fatter. Pipe is fatter. ठीक है. तो bandwidth delay आपको ये बताता है कि इस pipe के अंदर, इस pipe के अंदर इस वक्त यहाँ पे कितनी mass मौजूद है, कितनी quantity मौजूद है, कितनी bits मौजूद है, कितनी bits मौजूद है. ठीक है. So these will be the bits that I have sent from here. मेरा एक लिंक है मार्स के साथ, मैंने यहाँ से bits भेज दी one after the other, लेकिन मार्स पे पहुंचने में उनको बहुत टाइम लगेगा. बहुत सारी bits in flight होंगी, बहुत सारी bits in flight होंगी. तो जो in flight bits हैं वो सारी की सारी they are defined by this bandwidth delay product. Okay. So number of bits in flight at a time will be indicated by the bandwidth delay product. Some examples here. So let's say we have same city within approximately 10 kilometers over a relatively slow link, and bandwidth is 100 megabit per second. This is a slow link compared to a gigabit or 10 gigabit per second link, by the way. So slow is all relative. And the propagation delay, since it's a city very small, propagation delay is very, very small. It's fast. So propagation delay is 0.1 millisecond. So bandwidth delay product in this case is 10,000 bits. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि if there are two machines which are communicating with each other, directly connected to each other, ये जो link है, इस link के ऊपर 10,000 bits are in flight, जो sender ने भेज दी है लेकिन अभी receiver को मिली नहीं है. They are in the pipe, they are on the link. ठीक है. So 10,000 bits would be the bandwidth delay product. So if you have a cross country link over order of 1,000 kilometers, बहुत लंबा link हो गया. ठीक है. Over a fast link means let's say 10 gigabit per second link. ठीक है. This is very common. By the way, these numbers are selected. These are realistic numbers. These are not non-realistic numbers. These are realistic numbers. So propagation delay would be longer, 10 millisecond. So 10 millisecond. एक तो pipe की length बहुत लंबी हो गई. ऊपर से bandwidth is very, very high, which means the pipe is very fat. The pipe is very fat. The pipe is very long because it is cross country. It's very long because the bandwidth is very high. It's very fat.
So that means just too much mass inside the pipe, which means the bandwidth delay product in this case is 10 to the power 8 bits. ये वो bits हैं जो sender एक side से भेज देगा, लेकिन receiver को अभी तक receive नहीं हुई. These are in-flight bits. These are bandwidth. They depict the bandwidth delay product. Okay. So transmission delay in sum is how long does it take to inject or push all the bits of a packet into a link. It is not dependent upon the length of the link. Everyone is clear about that? Yes or no? Yes or no? Shoaib is yes. Maham, Mesam, Asim, everyone is yes. Many people yes, yes. We need to see more yeses. Need to see more yeses so that we can move forward. Great. Thank you. So I'm going to clear the feedback now. So transmission delay not dependent upon the length of the link. It's only the time it will take to push the bits or inject the bits into the link. कितनी दूर जानी है नहीं पता कुछ, ठीक है. Similarly, transmission delay is also the time that you need to extract the bits of the link. हमें नहीं पता कि कितनी दूर से आ रही हैं, लेकिन जब आपके पास पहुंच रही हैं जो bits, कितनी speed पे वो पहुंच रही हैं, that's dependent upon at what speed the link is operating on. Okay, so so packet size divided by the transmission rate. Packet size divided by the transmission rate of the link. So packet size जो होगा वो आप देखें bits में होगा. Transmission rate will be bits per second. So this quantity, packet size divided by transmission rate, this would be a quantity which would be bits divided by bits per second, which means second. So this will be the transmission time. This will be the transmission time of that packet. ये जो हमारा पैकेट था 1000 बिट्स का पैकेट था और वो 100 मेगाबिट्स पर सेकंड लिंक के ऊपर हमने भेजा है. कितना टाइम लगेगा उस पैकेट को इंजेक्ट होने में? इसका ये मतलब नहीं है पैकेट दूसरी साइड पे कब पहुंचेगा, हमें उसका नहीं पता चल सकता. हमें उसका भी नहीं पता चल सकता जब तक हम ये ना बताएंगे उस लिंक की लेंथ कितनी है. हाँ, हमें ये पता चल गया है कि how much time it will take for this packet to be injected, all the bits of this packet, all the 1000 bits of this packet to be injected onto the link, and that time is 10 to the power minus 5 seconds. So think about it. If you decrease the speed or transmission rate at which the link is operating, ये 100 megabit per second से मैं 1 megabit per second कर लेता हूँ, तो ये time जो है ये 100 गुना बढ़ जाएगा. Time 100 गुना बढ़ जाएगा. Okay. So propagation delay is how long does it take to move one bit from one end of the link to the other. It is not dependent upon at what speed the link is operating on. Not dependent on that. ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता 1 megabit per second पे कर रहा है या 100 megabit per second पे कर रहा है. ट्रांसमिशन डिले, ट्रांसमिशन टाइम उसके ऊपर जरूर डिपेंडेंट था कि किस स्पीड पे लिंक ऑपरेट कर रहा है. प्रोपेगेशन डिले इज डिपेंडेंट अपॉन द लेंथ ऑफ द लिंक एंड the speed at which the signal propagates on that link. Okay, that makes sense. So link ki length divided by the propagation speed of the link. So this would be meters and meters per second. So again, the units for this would be seconds. So again, the example is if you have a 30-kilometer link on which you send a signal with the speed of light, which is 3 to 10 power 8 meters per second, then it will take 10 to the power minus 4 seconds to reach the other end. एक बिट मैंने जो यहाँ से छोड़ी है उसको 10 to the power minus 4 seconds लगेंगे दूसरे एंड पे जाने के लिए. अगेन अगर मैं इसकी लेंथ को डबल कर देता हूँ, 30 की बजाय 60 किलोमीटर कर देता हूँ, दिस टाइम विल बी डबल्ड. लिंक की लेंथ मैं 10 टाइम्स कर देता हूँ, दिस टाइम विल बी 10 times, will become 10 times. So very easy concept, but very important to differentiate between the two. So we have few more examples in this slide. I think we are probably running out of time. What I will do is that I will upload these slides. On the LMS. LMS का resources section में मैं ये सारी slides डाल दूँगा. I think first set of slides though is already there. So we will have all these slides uploaded there. Please make sure that the rest of the slides
you go through those. हम उसको next time cover तो करेंगे, लेकिन we will cover it very quickly because we have spent a lot of time in explaining the difference between transmission delay, propagation delay, and all of these slides are about transmission delays and propagation delays. So go over these 5 or 10 slides, and next time we will pick up more details with the queuing delay and the processing delay. ये हम खत्म करेंगे और उसके बाद हम layered architecture के ऊपर जाएंगे. Layered architecture, which would be the next set of slides. वो slides भी जो है हम available करेंगे after we start covering. Okay. Anyone has a question? Anyone has a question at this point in time before we finish the सर session? ये जो प्रोपोगेशन डिले है इसमें क्यूइंग डिले काउंट होता है, जो इसमें प्रोपोगेशन डिले पूरा एक सोर्स से डेस्टिनेशन तक है, तो इसमें क्यूइंग डिले भी आ जाता होगा? Queuing delay उसके बीच में आ जाता है, हम उसको separately count करते हैं. Propagation delay के अंदर हम add करेंगे queuing delay. That's true. So it's not inclusive in the propagation delay, but we can add the queuing delay into the propagation delay. So we can say एक end-to-end delay है. The end-to-end delay includes the propagation delay as well as queuing delay as well as the processing delays within the switches. So in order to distinguish these different types of delays, हम propagation delay को exclusively जो time लगता है to get from one end to the other end just because of the distance and velocity of propagation, उसी को ही लेते हैं. इसमें सर क्यूइंग डिले नहीं आता फिर? नहीं, प्रोपगेशन डिले में क्यूइंग डिले नहीं आता. जब आप कहते हैं एंड टू एंड डिले, ठीक है, तो उसमें आप क्यूइंग डिले एंड प्रोपगेशन डिले को ऐड करते हैं, बाकी और भी अगर कोई डिलेज है उनको भी ऐड करते हैं, तो एंड टू एंड डिले में वो सारा कुछ आ जाएगा. प्रोपगेशन डिले में एक्सक्लूसिवली आप सिंपली डिस्टेंस लेते हैं एंड वेलोसिटी ऑफ प्रोपगेशन लेते हैं एंड दैट बिकम्स योर प्रोपगेशन डिले. ओके, थैंक यू सर. Any other question at this point? कोई और क्वेश्चन हो? सर एक और क्वेश्चन है सर, जो एक टर्म यूज होती है लेटेंसी, सर वो क्या होती है सर? वो किस कॉन्टेक्स्ट में? लेटेंसी भी डिले ही होता है. लेटेंसी भी डिले ही होता है. वो कौन सा डिले होता है सर? ये ट्रांसमिशन डिले होता है? वो कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है. मैं अगर कहूँ कि एंड टू एंड लेटेंसी है तो दैट मींस एंड टू एंड डिले. लेटेंसी जो है वो मैं इट्स अमाउंट ऑफ टाइम. मुझे अगर ये कहना हो कि लेटेंसी कितनी लेटेंसी होगी टू transmit this packet, that will probably be transmission delay. कितनी latency होगी in sending a signal from Lahore to Karachi, that would be propagation delay. So latency is very generic term, very generic term, just like delays. Delay भी very generic term है, इसीलिए हमने उसको जो है वो divide कर दिया है transmission delay और propagation delay और queuing delay और processing delay के अंदर. बिल्कुल इसी तरह latency को भी जो है वो आप डिवाइड कर सकते हैं. क्यूइंग लेटेंसी एक हो सकती है, प्रोसेसिंग लेटेंसी हो सकती है, ट्रांसमिशन लेटेंसी हो सकती है और प्रोपगेशन लेटेंसी हो सकती है. ठीक है. नाउ व्हेन वी आर सॉल्विंग सम ऑफ द क्वेश्चंस ट्राइंग टू फाइंड आउट द एंड टू एंड डिलेज, यू स्टार्ट सेंडिंग द फर्स्ट बिट एंड फिनिश रिसीविंग द लास्ट बिट. सेंडर ने पहली बिट भेजी और रिसीवर ने आखिरी बिट रिसीव की, दरमियान में कितना टाइम लगा? ये इतना सिंपल नहीं होगा कि हम हर बिट का जो है वो प्रोपगेशन डिले ऐड कर दें. इसके लिए very important, very important to draw the timing diagram. Timing diagram बना लें तो ये piece of cake है. Timing diagram नहीं बनाएंगे तो चक्रों में पड़ जाएंगे, ये मुश्किल हो जाता है उसको जो है ना वो visualize करना. But if you draw the timing diagrams, it will become extremely easy to draw these delays. We will give some homework problems to practice with these, and उसके solution भी हम आपको provide करेंगे. So homeworks we will probably be uploading sometimes today. आज अपलोड कर देंगे. आपके पास कुछ दिन होंगे उसको अटेम्प्ट करने के लिए. Very simple questions. लेकिन when you are attempting those questions, very important to realize कि ये जहाँ पे भी delays वगैरह calculate करने, draw the timing diagram. ये जो हम vertical axis के ऊपर time डालते हैं ना, तो left एक sender है एक receiver है, vertical axis डाल दें जिस पे time चल रहा है, वो आप draw कर लें तो then it's a piece of cake. Very easy. कोई भी कर सकता है. ठीक है. अगर वो नहीं बनाएंगे तो फिर मुश्किल होगी. Any other thoughts, any other questions? By the way, we will also be floating a survey कि हमें जो है ये tests करने हैं. So these tests would be on LMS and these tests would be, आपको एक
बड़ी ड्यूरेशन दे देंगे उसके लिए, लेकिन वो पूरी ड्यूरेशन में आप टेस्ट नहीं करेंगे, आपको टेस्ट करने के लिए एक स्मॉलर विंडो अवेलेबल होगी। सो लेट्स से 20 मिनट्स और 30 मिनट्स आपको टेस्ट के लिए अवेलेबल होंगे, जो आप एक 3-4 घंटे की विंडो में कर सकते हैं। एक दफ़ा आपने स्टार्ट, आप देख लें जब भी आपके पास टाइम है उस 3-4-5 घंटे की विंडो में, जब भी आपके पास 15 मिनट 20 मिनट हैं या आधा घंटा है, जितनी देर का भी वो टेस्ट होगा, तो आप स्टार्ट कर दें और उसको फिर फिनिश कर दें, 1 गो के अंदर उसको फिनिश करना होगा। सो वी विल हैव अ सर्वे कि व्हाट आर द मोस्ट सूटेबल टाइम्स, ऑल्दो वी विल गिव लार्ज टाइम स्लॉट्स जिनके बीच में आप ये टेस्ट वाली विंडो जो है वो फिट कर सकते हैं। So hopefully everyone will be fine with that, but we will have this survey conducted sometime soon. Okay, any questions regarding that as well? कोई टेस्ट से रिलेटेड अगर कोई सवाल पूछना हो? नहीं? Okay, then I will finish this session here. We will finish here, and thank you very much. Khuda Hafiz.